नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी और स्वागत है आप सभी का इस अनोखे किताबी मेले में जिसका नाम है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 7। नया सीजन, नया रीजन टू ग्रो। सो गुड इवनिंग टू ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने मेरी किताब मेरी कहानी, आपका चहेता प्रोग्राम मेरी किताब मेरी कहानी का सीजन 7 लेकर। ये प्रोग्राम शुरू हो चुका है और आज इस सीजन का सेकेंड डे हम टेलीकास्ट कर रहे हैं। डे 1 में हमने बात की थी रिया रघानी से, हमारी ऑथर रिया से हमने बातचीत की थी, उनकी बुक के बारे में हमने बातचीत की थी, जिन्होंने शेयर की थी अपनी राइटिंग जर्नी और कैसे उन्होंने अपनी इस बुक को लिखने का सफ़र कंप्लीट किया और आपके सामने उन्होंने डिस्कस किया कि किस तरह से उन्होंने कुछ हर्डल्स को पार करके या अपनी भावनाओं को, अपनी एक्सपीरियंसेस का निचोड़ इस किताब में डाला है और एक तरह से पूरे वातावरण को उन्होंने कृष्णमय कर दिया था। आज भी हम आपके लिए लेकर के आए हैं ऐसे ही एक और प्रतिभाशाली ऑथर जिन्होंने अपनी राइटिंग जर्नी के थ्रू आपको प्रभावित किए बिना नहीं रहेंगे। आज जिन ऑथर को हम इनवाइट कर रहे हैं, उन ऑथर ने जो बुक लिखी है वो उनकी डेब्यू बुक है और जो बुक उन्होंने लिखी है वो अपनी खुद की लाइफ के ऊपर बेस्ड है। उनकी लाइफ किस तरह से एक रोलर कोस्टर की तरह रही है, ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव आए हैं और किस तरह से चैलेंजेस का उन्होंने सामना किया है अपनी फैमिली के साथ मिल कर के और अपने आत्मविश्वास के थ्रू उसी को उन्होंने इस किताब में निचोड़ रखा है। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से 6 सीज़न आपने हमारा साथ दिया है, हमें सपोर्ट किया है, उसी तरह से इस सीज़न में भी आप हमारे सभी ऑथर्स की कहानियों को अपने आप से रिलेट कर पाएँगे और उनकी जर्नी को सुनने के लिए आप सभी उत्सुक होंगे। तो आज हम बातचीत करने वाले हमारे आज के ऑथर से। इससे पहले कि हम उनके साथ बातचीत शुरू करें, उनका एक क्विक इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप उनके साथ ईज़िली कनेक्ट कर पाएँ। सो जो ऑथर आज हमसे जुड़ रही हैं, शी इज़ अ डेडिकेटेड एंड पैशनेट एजुकेशनिस्ट with nearly 3 decades of experience in the teaching profession. Her deep love for teaching has driven her to go beyond the traditional boundaries of education, motivating and inspiring young minds on both national and international platforms. So without any further delay, मैं invite करना चाहूँगी हमारी आज की गेस्ट ऑथर को, जिनका नाम है ब्रिजिट मेंडोंसा। हाय ब्रिजिट, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? I'm fine, ma'am. Feeling very nice to be here. थैंक यू सो मच। मेरी किताब मेरी कहानी प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो हाउ आर यू फीलिंग टुडे? आज हम इस प्रोग्राम का सेकंड डे टेलीकास्ट कर रहे हैं। इस प्रोग्राम से जुड़कर आपको कैसा फील हो रहा है? हाउ आर यू फीलिंग? I'm feeling great. I'm very much curious about this book, the book of mine, and waiting to see the book go great. एब्सोल्युटली। सो ब्रिजिट, मैंने अभी इंट्रोडक्शन में आपका छोटा सा एक आपके बारे में बताया, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, आप अपने बारे में प्लीज बताइए। व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ और कहाँ से बिलोंग करते हैं आप, और अपने बारे में थोड़ा बताइए प्लीज। Yeah, I belong from Karnataka, and my hometown is Karnataka. That is a small town from Karwar. And ओके। from Karwar, we moved to Bangalore for my further studies as young girls. Me and my sister, we had learned in Bangalore, studied in Bangalore, and from Bangalore, it was never-ending journey. There we started up as young girls, and I took up the profession of a educationist. Being a teacher, I have molded many minds and many youngsters in school from Bangalore to Gulf. And right now, I'm working as a educationist and as a counselor, admission counselor in Presidency Group of Institutions in Mangalore. Basically, I'm from Karnataka. Right now, I am based in Mangalore. I have worked in Bangalore for around 10 years. And then I moved to Gulf, that is in Oman. I have served for 17 long years. And just into 2022, I came back to Mangalore and started working again as an educationist. Right now, I am with the Presidency Group of College and Institutions. ऑल राइट। That's it. ओके। सो ब्रिजिट, अब कुछ
दिन पहले ही हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करके आए हैं, सो आई एम श्योर ये दिन आपके लिए बहुत स्पेशल रहा होगा, बहुत ऑस्पिशियस रहा होगा। इसके साथ-साथ में रीडिंग एंड राइटिंग के बारे में हम बातचीत करते हैं इस प्रोग्राम में, और हम अपने सभी ऑथर से इस बारे में पूछते हैं कि कितना इम्पैक्ट डाला है इन हैबिट्स ने उनकी लाइफ में। सो आपकी लाइफ में कितना आपकी लाइफ को कितना इंस्पायर किया है, कितना इम्पैक्ट रखा है इन इन 2 हैबिट्स ने, रीडिंग एंड राइटिंग ने? व्हाट डू यू से? For me, reading, and for most of us, being an author and being an educationist, I would always say reading has a different impact, and writing has a different impact on any human being, as young, even for young minds. When we read a lot, it makes us more knowledgeable. But when we write, it makes us perfection. It brings us to a perfect level of what we complete the sense of reading and writing together. It's the it's two faces of the same coin. So when we read a lot, that makes us more good in writing, and our writing becomes perfect when we read a lot, and it gives us ideas and gives more strength of vocabulary to put it into writing. When we read a lot, we have a lot of vocabulary under our belt to use them in the form of writing skills. So writing and reading are very important for anybody. If you are taking up as a writer or as an author, it does help us a lot. Absolutely. So, Bridget, how did you start your writing journey? Yeah, when I was working as a teacher in Oman, I Mm. I gave a lot of writing what to say writing skills, like I gave importance to writing skills, and then I started giving short writings, like writing scripts for programs, writing scripts for school functions, and started comparing it on stage. I fell into writing habit. By doing this, it improved my writing skills. And later, I started writing short stories, poetry, and then small paragraphs for children and for the school. This made me a perfect person to write. And slowly, I started writing this book. एब्सोल्युटली। फ्रेंड्स, हम में से बहुत ऐसे लोग हैं जो कि अपनी चाइल्डहुड से या फिर हम कॉलेजेस में जब आते हैं तो धीरे-धीरे कुछ ऐसे असाइनमेंट्स होते हैं या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनके थ्रू हम शुरू करते हैं अपनी राइटिंग जर्नी, और वो हमें पता नहीं होता कि वो जो हॉबी होती है, आई एम श्योर आप भी इससे एग्री करोगे ब्रिजेट, कि वो जो हॉबी है उसको हम धीरे-धीरे अपने पैशन के रूप में या आगे फॉलो करना शुरू कर देते हैं, और आगे जाकर के हमें ये नहीं पता होता कि हम एक बुक भी लिख सकते हैं, एक बुक को एक साकार रूप दे सकते हैं। यहीं से शुरुआत हो जाती है। अगर आप एक ऑथर बनते हैं या आप एक कोई किताब लिख रहे हैं अपनी एक्सपीरियंसेस को लेकर के, तो ये शुरुआत जो है वो शुरू से ही होना शुरू हो जाती है और धीरे-धीरे हमारे माइंड में वो इनकलकेट होती है। जैसे कि हमारे आज की ऑथर कह रही हैं कि बचपन में कुछ स्टोरीज़ को बच्चों के लिए लिख कर के और खुद के लिए भी इन्होंने कुछ स्टोरीज़ या लिखी, और उसके बाद में धीरे-धीरे राइटिंग की हैबिट या राइटिंग का शौक इनके अंदर आया और इन्होंने एक बुक लिख दी है। तो इसके बारे में हम और आगे चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले ब्रिजेट, हम जानना चाहेंगे कि हु इंस्पायर्ड यू थ्रू आउट दिस जर्नी? किसने आपको मोटिवेट रखा इस पूरी जर्नी में? किसने आपकी हेल्प की? Yeah, first of all, I would say that as a girl, as a young student, I was always into reading and reading books which were not the subject of, like like academics. I went away and I read some other books, like story books, novels, and motivational books, which Okay. always made me or helped me to write better way. And then slowly I started writing, but this inspiration came from the friends, from my family, from my siblings, and from my father and my spouse, I would say, because they were the people who inspired me a lot. My colleagues, my students, who always admired my writing skills, and they always said, "You must write more." So people Mhm. were the ones who need to write more and more and finally become an author. राइट, राइट। सो फ्रेंड्स, अब समय आ गया है कि हम ब्रिजेट की किताब के साथी से बातचीत करें। सो मैं इनवाइट करना चाहती हूँ इनकी सिस्टर बेलिंदा को। Hi. हाय, गुड Hi. इवनिंग बेलिंदा, हाउ आर यू? I'm fine. Thank you. I hope you guys are good too. Absolutely, and good to see you and welcome to this program.
हम बात कर रहे Thank हैं you. ब्रिजिट से, इनकी राइटिंग जर्नी के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं एंड शी इज सेइंग कि फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स हमेशा मोटिवेट रखते हैं, हमेशा इंस्पायर करते हैं। आज ब्रिजिट एक पब्लिश ऑथर बन चुकी है, सो व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दिस फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म टू ब्रिजिट? व्हाट डू यू वांट टू से? हाउ आर यू फीलिंग? I feel so proud of my sister because I think this story needs to be told. Uh, I feel all of us are like stars, like everyone. You are a star, she's a star. I think there are so many stars in this world, and we are all meant to shine in our own respect. And just because the story is not told, that doesn't mean that you are not a star. You have to take the courage to share your story so that many more stars start shining in the world. Absolutely. Because there's no point in living this life if we cannot inspire others. And I think inspiring comes from sharing, and that's very important. And I'm so happy that she decided to do this and fulfill her dream. I'm so proud and happy for my sister. And of course, I hope and I believe that this will touch at least a few lives, touch a few people who also take inspiration to fulfill their dreams, whatever their dreams are. And this is coming in a right time right now, because everything is like AI inspired, and we are in such a fast moving pace. People want everything to be like a quick fix. We are also mothers. We all know that how kids behave in today's time and age. Everyone wants everything to happen just overnight. uh, and there are certain things that we can learn where we are coachable online and take some crash courses. But many things in life, the uh, most difficult things in life, are not learned by online or on quick fix. They are the thing that she's described in her book, Never to Give Up, is a small caption, but it covers a wide spectrum of human spirit. And I think this book is all about that. I do not want to give out too much. I think the readers need to they should be curious to read it. And the whole thing is about encouraging people not to let their human spirit to die down. And these spirits are like made out of things that we cannot learn online. It's like, for example, compassion, love, sharing, caring for others, the endurance and grit, and the fortitude that we have, to fight life. These are the things that the book, and this book is about this. It's not only her story, it's about reaching out to people and encouraging people to uh, be courageous and believe in yourselves. You are the greatest power in the world. So I'm Okay. very happy about this book for her. Okay. So, Belinda, have you noticed any changes in Bridget after becoming an author or writing a book? Any changes? Um, any changes? I have not seen those kind of changes, but she's gone through a lot even during the journey of writing this book. Both on professional level and in her personal life. She's gone through a lot ups and downs during the journey of writing this book. But she used to be like the most mildest among the siblings, but she has, over a period of time, through her own journey, she's become the strongest soul to Mm, overcome this, to go through this, to navigate, find her own solutions to her situations in life. And that she has become better and better. It's like every time she's being challenged, she's given her better self, her better version has come out. And that mm. I've seen time and over again throughout this, even throughout this phase of writing her book. This is something that I'm very proud about my sister. Beautiful. Belinda, any message you want to convey through this platform to Bridget? I would say keep going. And I will always, as you see, that we are twins and she's my twin soul. Besides that, I would just say that, it's not just because she's my sister, but I see a great human spirit in her. And I wish her all the best in all her ventures or walks of life, whatever she chooses to do in future. So this is my message, and to all the readers also, to never allow the human spirit to die down and keep going.
एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच बेलिंदा, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। ओके, सो ब्रिजेट, आपकी सिस्टर से बात करके बहुत अच्छा लगा। शी इज़ वेरी मच एक्साइटेड। कितना मतलब वो चीज़ फेस पे उनके दिख रही थी, कितने एक्साइटेड थे वो, कितना खुश लग रही थी आपकी बुक के लिए एंड आपकी इस जर्नी के लिए। हम अब आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, आपकी बुक के बारे में जानना चाहेंगे। सो प्लीज़ टेल अस अबाउट योर बुक। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द बुक? व्हाट इज़ द प्लॉट ऑफ द बुक? Yeah, the title of the book, first I was myself in a confusion what I should name this book like. First I thought I should name it as Roller Coaster. Then I Mhm, thought, no, this is roller coaster makes it more technical. And then I thought it is about my life. And mhm. I have narrated the story as I have undergone through and I have faced life through. So I have named it as the ride of my life, because everybody's journey is just like a cycle. It will Hmm. just, today it is up and tomorrow it will be down. Today it will take a higher wave and tomorrow it will take a lower wave. So that I have kept the name as the ride of my life, but also I have given a punchline to the book saying that it's a roller coaster, and when it spins, seat belts is the thing we have to take care of. Seat belts in the sense it is our emotions, our feelings, and all that comes with the human nature. So that's the name of the book. So in short, I would say this is not only a book, just a book or just my life or just the struggles what I've come through, but it is also a journey of a human heart, a human person with lot of emotions and a lot of compassion, kindness, and everything is covered up in this book that we need in today's life, because today's life is becoming more and more mechanical, and our younger generation have become more digital in today's life, and they see it human kindness, compassion, and all this other nature of a human being as a digital one. They think in a very very mechanical way. So this is the book which deals with your heart, with emotions, with kindness, with compassion, and all that comes with human person. ऑलराइट। सो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ब्रिजिट से और इनकी बुक के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, और इनकी बुक का नाम है द राइट ऑफ माय लाइफ। और इस बुक की जो टैगलाइन है, इस बुक की जो सबटाइटल है, वो मुझे बहुत पसंद आया ब्रिजिट। मैं उसको एक बार ज़रूर दोहराना चाहूँगी। व्हेन लाइफ टेक्स यू ऑन अ रोलर कोस्टर स्पिन, करेज इज़ योर सीट बेल्ट। दिस इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। करेज जब तक आप में नहीं है, आप अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते जब तक आप में करेज नहीं है उस चीज़ के लिए। अदरवाइज़ आपकी लाइफ आपको जहाँ ले जाएगी, आप वहाँ बहते चले जाएँगे। आई एम श्योर आपने भी अपनी लाइफ में उस करेज को, उस उस मेन सीट को आपने होल्ड करके रखा, और चैलेंजेस को पार करके आपने इस जर्नी को जो है वो आप बहुत खुशी से जी रहे हैं। हम आगे भी इस बुक के बारे में आपसे जानेंगे, बहुत सारी क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले जितने भी लोग अभी इस समय हमें देख रहे हैं, सो फ्रेंड्स, अगर आप इस टॉपिक पर आप कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, इस बुक के टाइटल के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहेंगे या फिर हमारे ऑथर से आप कुछ बातचीत करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन के थ्रू आप अपनी बात कह सकते हैं। आप अपना कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, और जो आप इस बुक के बारे में जानना चाहते हैं, इस टाइटल के बारे में आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका कोई विचार है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के थ्रू शेयर कर सकते हैं हमसे। सो नाउ ब्रिजिट, आपकी टैगलाइन मैंने अभी दोहराई है, आप प्लीज इसको थोड़ा डिफाइन करके बताइए कि व्हाट इज द मीन बाय सीट बेल्ट, व्हाट इज द मीन बाय करेज, ऑल दिस थिंग्स। See, when we are confronted with difficulties, with some kind of disaster in our life, with some kind of failures, we should never lose our heart. And most of the time, we see that in present time, the present generation have no patience for seeing better days. They want immediate results. It's like a click of a button, just click this button and you'll get a result. Click that button and get a result. राइट। Human hearts are not like that. We have to deal with emotions, with our feelings, with the people around us. Only then we become a strong person. When failures encounter us and when we face difficulties in life, don't lose your heart. Don't give up. It's a challenge that we have to face. And every human being
be it you, me, or anyone in this world, will have face challenges in life. It might be in the form of failures, it might be in the form of financial thing, it might be in the form of relationships and all those things. In today's generation, I see that when failures come, we have never taught present generation to face failures, and that is why children go into depression and they take a wrong path. So this is mainly because we have not never taught them how to take and face the failures of life, to remain calm, to look at the solutions, not to go into only disaster is the thing and finish, that's it. No, when we face failures, when we face life, we will all the time, life is not a bed of roses. We Mm-hmm. will have difficulties and all the other things. So we should teach children to be more patient, to wait for the best to come, and to face life, never give up life, and to keep on moving. So that tagline, punchline, what I have given you, given for the book, is very suiting for the book what I have written. So courage is the seat belt, means we should not fall down at any cost. We Mm-hmm. need to get up, move on. Our ride is still on, so we need to move on. That's what we have to do in our lives. True, true, Bridget. So, Bridget, what is the biggest learning have you learned from your life journey? कौन सी ऐसी एक लर्निंग है जो आपने अपनी लाइफ से सीखी है? आप चाहते हैं कि आप दूसरे भी इस चीज से इंस्पायर हो और वो गलती ना करें, वो कोई एक लर्निंग आप शेयर करना चाहेंगे? Yeah. See, I grew up in a family where my father was a soldier. He was in the Indian Army. And we have seen how he faced life. He too हम्म. had difficulties and he had to fight on the battleground. And he still kept himself, strong and determined. When we face difficulties, I have learned from my parents, even my mother for that matter, that how strong woman she was and she is now. So things which we learn from our parents, we will try to inculcate in us. As we grow older, it comes into us that we become more and more strong in our way of handling difficulties and all these things. So today, when I talk about my book, I always say that never give up. And I have used this word, this sentence, never give up, because I learned it from my parents, because they never gave up in life. They always looked up to all these challenges as a thing that could make one more stronger. Through challenges, we become more and more stronger. And that's what I feel today through this book. I would like to pass on this to my students, to my friends, to my colleagues, whoever is watching this and reading this book, that never give up at any cost. You need to fight your battle yourself. Be brave. Don't give up. एब्सोल्युटली। फ्रेंड्स, अगर आपकी लाइफ में भी कभी ऐसा कोई मोमेंट आया है कि आपने ये फील किया हो नेवर गिव अप, मुझे कभी गिव अप नहीं करना है, अगर ऐसा आपकी लाइफ में कोई मोमेंट आया है, कोई इंसिडेंस आया है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में शेयर करके बताइएगा कि किस तरह से आपने गिव अप नहीं किया और किस तरह से आपने उस पर विजय प्राप्त की, कैसे आपने विक्ट्री ली उस मोमेंट के ऊपर, उस सिचुएशन के ऊपर। हो सकता है कि बहुत से लोग उस चीज़ को पढ़ें, आपके कमेंट्स को पढ़ें, उस चीज़ को समझें और इंस्पायर हो उस चीज़ से। तो अगर आपके जीवन में ऐसा कोई अनुभव हुआ है, तो प्लीज़ कमेंट करके हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो नाउ ब्रिजेट, आपने अभी बार-बार एक वर्ड बोला है नेवर गिव अप, जिसका मैंने अभी भी चर्चा की है। व्हाट डू यू थिंक कि दिस इज़ द ओनली मंत्र फॉर अ सक्सेसफुल लाइफ, फॉर अ ग्रेट लाइफ? See, never give up means when we are faced with difficulties, when we have to face failures, when we have to face disasters in our life, when we give up, the story is over, finished. हुँ, We will think that is the end of everything, and we never go to sort the things out from our life. We never हुँ, try to solve problems by searching or by finding out the root cause of the problem. First, we need to look at it, at where did I go wrong, what were the problems which were making this as a problem, or as a difficulty, or as a disaster in life. You might have difficulties which may be related to anything in life, any field we go, we have difficulties, हुँ, be it हुँ, personal or professional. But we have to always look at things which will help us and be positive about things. Live with people who will encourage you. Don't, you have to take negativity also as a sense.
Like when somebody will tell you about negative things, don't take it in the negative sense. You try to we try to correct it and get a better place in life, so we can improve ourselves and we can find a solution to all these disastrous things like failures and failure in relationship, failure in profession, failure in financial or economical thing, failure in society also. हुँ, एब्सोल्युटली। और आई एम श्योर जब लाइफ में इस तरह के हर्डल्स आते हैं या ऐसी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, तो उसका एक एक रीज़न, एक फैक्टर होता है हमारी सोसाइटी। सोसाइटी के थ्रू भी ऐसी बहुत सारी नेगेटिविटी या नेगेटिव लोग ऐसी थिंकिंग रखते हैं, या या सोसाइटी के कुछ लोग हमसे जुड़े हुए होते हैं जो कि इस तरह की नेगेटिविटी फैलाते हैं हमारी लाइफ में, जिस वजह से वो सिचुएशन हमारे लिए और भी ज़्यादा डिफिकल्ट होनी शुरू हो जाती है। व्हाट डू यू थिंक कि सोसाइटी को किस तरह का रोल प्ले करना चाहिए एक ऐसे पर्सन के लिए जो ऑलरेडी बहुत डिफिकल्ट है लाइफ में, जिसकी और इस चीज़ से गो थ्रू हो रहा है, सोसाइटी को क्या रोल प्ले करना चाहिए? Feel society do a lot actually in a on a emotional हुँ, level. When we face difficulties, it's not that everybody is longing for some kind of financial help. Sometimes the difficulty level might be emotional. You need to एब्सोल्युटली। share the emotional bond. It, हुँ, everybody is telling a sad story to gain some financial help or anything. हुँ, Sometimes हुँ, the help they need might be physical, mental, or emotional, which is very, very important. Today's society will also and should also understand that difficulty level can be of any kind, or a person might need help emotionally to support that person emotionally. That a person should be listened or heard to, share the story of that person, be a good listener. That is more important. When somebody tells you their story, we have to be a patient listener more than anything. And then difficulty level is of any kind. Like we have to understand the person's life and to give them the required support. एब्सोल्युटली। I was writing ब्रिजिट। this book. I got very good support of my colleagues, be it in Oman, be it in India here, wherever I worked, like my seniors, my coordinators, my principals were a great source of support for me, which helped to write this story and that helped me to come as a author in front of you today. Otherwise, I wouldn't have written or come this far. Like, if the support was not given to me and this kind of appreciation for my writing. See, everybody needs a pat when we do good things. Like kids, they when they do good, when they perform well, they always expect that appreciation from their teacher or whoever. Even we राइट, need appreciation and kind of reward for what we are, doing. Reward means that doesn't mean a kind of financial reward. It can be in the source of appreciation and support, which I always found with my friends, with whomever I was around with in the school or in the friend circle, and my students especially. My students are a great source of support for me. राइट। सो ब्रिजिट, एज़ यू आर अ टीचर, पैशनेट टीचर, so what role do you consider for yourself as a teacher? I feel teaching is not only till the book level. See that only our portions should be finished and we should teach only the lessons which are taught in the class. No, Hmm. we should be a kind of connection between the child and the teacher. The teacher should be well connected and the bond between the teacher and the student should be well maintained. When we child, we should listen to the child's difficulty level, try to help them out, try to teach them something not only with the studies but also as a human being. Teach them emotionally and how to develop the human relationship between uh, one, for that matter, with the parents, with the friends, with their siblings, with the teachers, with the elders, where the present generation is missing, when it comes to respect, when it comes to love, affection, kindness, compassion, patience. These are all the things which are not taught in the book. We have to relate with human to human kind, heart to heart.
So when we teach them, it shouldn't be only till the book level. We should also touch the nature and the moral values, which will play a lot of role in living as a human being in the society. That is the role I feel being a teacher is, and be patient and be a good listener to the children. And in the process of teaching, we also get to learn a lot, I feel. राइट, राइट, राइट। और आज के टाइम में स्टूडेंट्स इतने सारे कंसर्न्स लेके आते हैं बच्चों टीचर के पास में। आज के टाइम में बच्चे मेंटली इतने ज़्यादा प्रेशर में होते हैं, पढ़ाई को ले लीजिए या फिर सोसाइटी में पीयर प्रेशर ले लीजिए, वो कॉर्पोरेट तक ही सीमित नहीं रहा है अभी तक। वो स्कूल में बच्चों के क्लास में भी काफ़ी ज़्यादा आ गया है और बच्चे इसको एक प्रेशर के रूप में लेते हैं और कई सारे वर्ड्स बहुत नॉर्मल हो गए हैं बच्चों के लिए लाइक जैसे आई एम वेरी इन स्ट्रेस, एंग्जायटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ये चीज़ बहुत नॉर्मल हो गया है बच्चों के मुँह से सुनना। आपको क्या लगता है Yes, कि आज या आप क्या कहेंगे इस बारे में? because children are become more and more technical and digital these days. Parents Yeah. don't have time. Parents don't have time to spend with the children, so they buy a mobile and give them. The child is busy the whole in the mobile, and everything looks like, digital for them. There is no connection between human bond. The हुँ, human bond and relationship, what should be there between a child and a grown up, is missing. The parents are working from morning till evening, and child यस, is like nobody to talk to. Sometimes there is only a single child at home, no siblings, no, they are shut inside the room with only one mobile or a computer. So that हुँ, makes a child you know get into more and more into depression and kind of self, like they become selfish also in this case. They don't यस, understand humankind and human heart. So I feel we should teach this to our younger generation and be a compassionate teacher, compassionate person. When we listen to children's stories these days, we feel sad. हुँ, See, when हुँ, we were young, we were not having this computer, mobile, and all that. This much exposure was not there to all these technical things. And we were always like human, heart to heart kind of a relationship we had with यस, friends, with our parents, with our siblings. So we are not so much involved. We can live without technical things even now. But technical things are also important in these days. But there should be a line of limit which is required, which is missing in this. Everything should be in balance. That balance हुँ, is not there between in today's children. When we talk about this computer and mobile and all that. या। सो ब्रिजेट डू यू थिंक कि स्पिरिचुअलिटी हेल्प कैन हेल्प इस सिचुएशन में हेल्प कर सकती है? बच्चों के लिए भी, Definitely. बड़ों के लिए भी? या, Yes, yes, yes. I would like to say that every time I was encountered with difficulties, problems, I always had a divine intervention. I always felt that uh, the divine power is telling me uh, to be careful. Something wrong is going to happen. Like I was always intervened with divine intervention, and I felt that prayers are very, very important in today's life, because nothing is in human hand, nothing is in the computer hand, nothing is in the technical world today. Everything is in the almighty's control, which we हुँ, are also unable to control. Whatever is going to happen in the almighty's control. We can't do anything about things which are going wrong in our lives. We should accept them and learn to understand what is it about. Like when almighty tells us that something wrong is going to happen, or we have to lead our life in a certain way, we need to follow it. When we don't follow certain things, when divine intervention is there in our life and when we don't understand it, then that intervention will turn into something else that we later realize that, oh, that is why I was not able to concentrate on this, or I did not listen to या, what the mind was telling me. We हुँ, don't हुँ, listen to our heart and to our mind word and by our intellectual level. But Almighty might have told you this so many times, but we have not heard, and we must have gone astray. So divine intervention and the spirituality is very, very, very important. एब्सोल्युटली।
ये आपकी जो बुक है जिसमें आपने अपनी पूरी लाइफ जर्नी शेयर की है, एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, आपको क्या लगता है कि जो रीडर्स होंगे आपके इस बुक को जो पढ़ेंगे, जो समझेंगे, उन पर ये क्या इम्पैक्ट डालेगी? उनकी लाइफ को किस हद तक चेंज कर पाएगी? आपको क्या लगता है? I feel that this book is for people who are who difficulties and who face problems in life. They should also be little calm, little more prayerful, little more understandable of why things are going wrong, why things went wrong, and what are the solutions for, and find their own way to come out and follow the path which Almighty shows you. So I feel this book will definitely a lot to younger generation who is having less of patience these days, less of connectivity with each other. So this will teach the younger generation also. And it is not that everybody is having same kind of problems, ma'am. It will be difficult problems, problems which are not related to the same kind. But Mhm. problems are problems. You can find solutions following these prayers, following patience, following kindness, compassion with each other. These are the things which we need to understand and follow in our lives. एब्सोल्युटली। ब्रिजेट, अब हम पहुँच गए हैं अपने सेकंड सेक्शन पे, सेकंड सेगमेंट पे जिसको हमने नाम दिया है माय जर्नी सीक्रेट्स और ये एक तरह का रैपिड फायर राउंड है। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूँगी, क्विकली आपको उसका क्विकली आंसर देना है। सो आर यू रेडी फॉर दिस? Yes, ma'am. Okay. So my first question is for you. What is the real happiness for you? My inner peace. Okay. What is the definition of a true friend? Be a person who shares your another person's difficulty level, to be a part of that person's life. Your friend should not be a friend only in, it's not a good weather friend. It should be a friend forever, not during when the days are good. It should be a friendship should be there even when days are good or bad, Okay. all the time. Define yourself in one word. Compassion. Okay. Next question is, when you're stuck somewhere, how do you motivate yourself? Always think that there is a way out. Don't give up. Okay. There is Always some positive. something, some problem, there will definitely be a solution to it. It is not that a problem comes with no solution. हम्म, बिल्कुल। So ये I भी think that एक solution. ये भी अपने आप में एक इतना बहुत पॉजिटिव नज़रिया है, जैसा आपने बोला कि कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है, तो सॉल्यूशन साथ लेके आती है। बस देर इस चीज़ की होती है कि हमें उस सॉल्यूशन को ढूँढना होता है, उसको पहचानना होता है। तो ये अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड है फ्रेंड्स लाइफ़ को लेकर के। अगर कोई भी प्रॉब्लम लाइफ़ में आ रही है, तो आपका जो ध्यान है, आपका फ़ोकस है उस प्रॉब्लम के ऊपर रहता है। लेकिन ज़रूरी उस टाइम ये है कि आपका फ़ोकस सॉल्यूशन के ऊपर रहे, क्योंकि वो सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम के साथ ही आ रहा है। तो ये ज़रूरी है कि हम प्रॉब्लम की जगह सॉल्यूशन पे फ़ोकस करें, तो वो प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाती है और आप उस चीज़ से जल्दी बाहर निकल के आगे के लेवल पे जाते हैं। राइट ब्रिजेट? Yes, Okay. yes, ma'am. So my last question is for you. Who is your well-wisher? I have quite a number of friends, and I can say they were angels in my life, who were throughout my journey were like strong source of support. My siblings, my parents, my in-laws, my husband especially, and my father. Throughout my journey, I have found people who have always come as a helping hand for me. And this book, when I have written this book has a foreword which is written by my sister, who, it was a great thing for me to say that, and I'm proud of saying that my sister has written the foreword for this. And my best friend Doris Norona has done the preface for this book. I'm very very thankful to both of them for writing this preface and the foreword for this book. And also I'm thankful all the people who have been a source of inspiration throughout my life to write this book.
If they were not with me, today I wouldn't have been author of this book. ओके, सो ब्रिजिट यहीं पर ये सवाल हमारा सेगमेंट फिनिश होता है। आगे बढ़ते हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि व्हाट काइंड ऑफ फीडबैक आर यू गेटिंग फॉर योर बुक फ्रॉम योर रीडर्स, फ्रॉम योर ऑडियंस? Students are my great fan. I have a fan following from my students, and ओके, sure, I'm sure I'll be doing great. I've done great in this book, and I'm getting good feedbacks. Like children are happy about it. My friends are very happy to read this book, and many more are still reading the book, and they have given a very good feedback about the book. They always felt that this book has always helped them to learn so many things. ओके। सो एनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यू वांट टू शेयर विद अस? सो मे बी हमारे ऑडियंस में से कुछ लोग आपसे कनेक्ट होना चाहें, आपसे बातचीत करना चाहें। सो एनी कॉन्टैक्ट डिटेल यू वांट टू शेयर विद अस? Yeah, I think I can send my email ID and my phone number. So my ओके, email ID is ma'am. ओके, श्योर। सो And my फ्रेंड्स, my फ्रेंड ब्रिजिट की जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं हम आपके साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर रहे हैं। आप उनसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर हम शेयर कर रहे हैं। तो अगर आप इनसे कनेक्ट होना चाहते हैं और साथ में मेल आईडी भी हम इनकी शेयर करेंगे, तो आप ब्रिजिट से बातचीत कर सकते हैं, इनसे पर्सनली गाइडेंस ले सकते हैं और इनकी बुक के बारे में आप जान सकते हैं। Bridget, any discount you want to avail for your book? yes, ma'am. I would like to give a discount of 24 hours for this Okay. book of 15% discount for 24 hours. ऑलराइट। फ्रेंड्स, ब्रिजिट की बुक अमेज़न पर लाइव है। अगर आप इनकी बुक को परचेज़ करना चाहते हैं, तो इस पर 15% का डिस्काउंट एमआरपी पर आपको मिलेगा। अगर आप फर्स्ट 24 आवर्स में इसको परचेज़ करते हैं, तो ये डिस्काउंट आप ले सकते हैं। इनकी बुक को ज़रूर खरीदिए, फिज़िकल कॉपी खरीदिए, इसको पढ़िए, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली में इस बुक को पढ़ाइए साथ में और आई एम श्योर इस बुक के थ्रू आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा और बहुत कुछ सिमिलर भी जानने को मिलेगा, क्योंकि लाइफ़ के हर्डल्स सबके अलग-अलग होते हैं, लेकिन उसको हैंडल करने का जो जो आइडल तरीका होता है, वो इसमें इन्होंने बताया है, अपने चैलेंजेस को इन्होंने फेस किया है। आई एम श्योर आपको ये बुक बहुत पसंद आएगी। इस बुक का रिव्यू देना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, सो नाउ एनी फ्यूचर प्लान्स ब्रिजिट? आपकी राइटिंग जर्नी को लेकर कोई और प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, आप शेयर करना चाहेंगे? Yes, ma'am. I would not stop with one book. This book is like my first debut book, and it's like a baby to me. And I would continue writing this writing in this writing journey. I will never stop writing again, because I will start writing many more stories, which might not be personal stories, but it will definitely uh, be a kind of motivation and inspiration for the younger generation to come. एब्सोल्युटली। ब्रिजिट, आपको क्या लगता है कि हमने आपकी सिस्टर से पूछा कि उनको क्या चेंज फ़ील हो रहा है राइटर बनने के बाद। आपको क्या फ़ील हो रहा है जब आपने एक बुक लिख दी है, पूरी अपनी जर्नी लिख दी है एक बुक में, अब आपको कैसा फ़ील हो रहा है? हल्का फ़ील हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ कर लिया? कैसा लग रहा है? I feel that I have shared my thoughts about life, about being patient, being strong from within. I have shared it with many more people, and I've shared with young minds, so that they will not lose heart, and they will be strong and become a successful person. एब्सोल्युटली। Definitely, it has brought a change in myself. जी, I जी। feel much more interested and much more looking forward to write many more books, and not to stop with this one book. जी। सो ब्रिजिट, बडिंग ऑथर्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे आप? एनी एडवाइस फॉर जो आपके जैसे ही डेब्यू लेकर के आना चाहते हैं, राइटर बनना चाहते हैं, उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? My advice is read a lot, and read books which are diverse genre. It might not be a book which you prefer to write, but we should also read and write books which are not of our genre also, because they have their own challenges.
when things are like not in our control. Sometimes we write books, books which are like different in their topics. And in budding authors, I would always say that they should read more and more, and accept criticism also, because with criticism we learn to correct ourselves, we learn to accept our mistakes or the faults whatever we have done, because everybody can't be a perfect writer at one with one बिल्कुल, thing. You will never be perfect. The more you write, and the same book, when you write again and again, when you correct and write again and again, in the last final write up, you will give a perfect book, a book with no flaws, a book with no mistakes. It is the final and the best copy which you write. So I will tell the budding authors, they should be patient enough, they should write more and more, and accept criticism also, because with criticism it should be a constructive one, which will yes, help us to better ourselves. absolutely. When Bridget, reading any is, last message? Yeah, yes, please. ma'am. When we read more, we'll get more exposed to a lot of vocabulary. And Hmm. when you have a vocabulary and hold on the language, definitely you can write well. Yes, yes. ब्रिजेट, एनी लास्ट मैसेज बिफोर यू लीव? आप कुछ कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, हमारे रीडर्स को? Everybody has different, my message will be, everybody has a different of life. My problems might not be your problems. Her problems might not be like another person's problems. Problems are there in different ways and different kinds. But we Yes. should stand strong, stand grounded, remain calm, patient, and draw that energy from positivity, not from negativity. Negativity will always make you more weaker. So be strong, take positive vibes from people around you. Don't go by the negative vibes. Negative vibes, negative people will give you some negative thoughts, but then you draw positivity from those negative vibes. That's the only thing I will say to uh, my readers and my friends and my younger friends, like students and all. Don't give up, and be strong from faith, in your faith. Be strong in your heart. Be strong physically, mentally, and emotionally. ब्यूटीफुल। ब्रिजेट, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने जो इनसाइट्स बताए, अपनी लाइफ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, और ऐसे आपने जो टिप्स बताए हैं लाइफ को और भी ज़्यादा हैप्पी जीने के लिए, आई एम श्योर हमारी ऑडियंस जो भी हमें सुन रही है वो इसको ज़रूर फॉलो करेगी, उससे इंस्पायर होगी और लाइफ में आगे से आगे पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेगी। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, आपके टाइम के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ऑल फ्यूचर प्लान्स, योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Namaste. थैंक यू। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेकंड डे, मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 7 का सेकंड डे आज हमने कंप्लीट किया ब्रिजेट के साथ, और इन्होंने नेवर गिव अप एक कीवर्ड हमें दिया कि कभी भी आपको गिव अप नहीं करना है लाइफ में। किसी भी तरह की सिचुएशन आ जाए कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, फोकस प्रॉब्लम पे ना करके सोल्यूशन पे करना है। आप जितनी वरी, जितनी चिंता उस प्रॉब्लम के बारे में करते हैं, उस चिंता की जगह अगर आप होप रखें, आप विश्वास रखें, आप फेथ रखना शुरू करें, तो वो प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि प्रॉब्लम सोल्यूशन साथ लेकर के आती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम भी, आज का सेशन, आज का डिस्कशन आपको बहुत पसंद आया होगा और बहुत कुछ आपने नोट किया होगा। जिस तरह से हमारे सेशंस हो रहे हैं, हम हर दिन हर एक ऐसी टॉपिक को, ऐसे ऑथर को लाने की कोशिश करते हैं कि आपको उनके थ्रू, उनकी लाइफ के थ्रू, उनकी लाइफ जर्नी के थ्रू इंस्पिरेशन मिल सके। डेली हम एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं, एक नई बुक के साथ आते हैं आपके सामने, और ऑथर अपनी ज़बानी, अपनी कहानी आपको सुनाते हैं। सो आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, कैसे चल रहे हैं ये सेशन, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ब्रिजेट ने बहुत सारे नगेट्स आज इस प्रोग्राम में हमें दिए हैं। सबसे पहले उन्होंने हमें बताया कि रीडिंग और राइटिंग हैबिट के बारे में। रीडिंग आपकी नॉलेज को बढ़ाती है, तो राइटिंग हैबिट आपको परफेक्शन की तरफ ले जाती है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप चाहे किसी भी लैंग्वेज के पर्सन हो, कोई भी लैंग्वेज आप बोलते हो, लेकिन अगर आपकी कमांड है उस लैंग्वेज पर, तो आप अपने आप को बहुत ईज़िली और बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जिस भी लैंग्वेज को पसंद करते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, आप उस लैंग्वेज पर
अपनी पकड़ बनाइए, अपना होल्ड कीजिए और आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं और ये काम होगा बुक्स रीड के थ्रू और राइटिंग के थ्रू। इसके साथ में ब्रिजेट की जो किताब के साथ ही इनकी सिस्टर को हमने इनवाइट किया, तो उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी जो मुझे बहुत पसंद आई, मैं उसको मेंशन करना चाहूँगी। उन्होंने बताया कि हम सभी स्टार्स हैं, हम सभी शाइन करते हैं। कुछ ऐसे स्टार्स हैं जो शाइन, जिन्हें पता नहीं कि वो स्टार है, वो शाइन नहीं कर रहे। दूसरे स्टार को की शाइन को देख करके वो अपने अंदर शाइन ले आते हैं। तो ये किताबें, ये कहानियाँ इसीलिए बनाई गई हैं कि आप उन बुक्स को पढ़ के, इन ऑथर्स की जर्नी को सुन के, जान करके आप भी अपनी शाइन को वापस ले आएँ और आप भी शाइन कर सकें। तो इसलिए उनकी ये बात बहुत ही खूबसूरत है, हमारे हमारे लिए, हमारी लाइफ में अप्लाई करने लायक है, तो आप इस पे ज़रूर गौर फरमाइएगा। इसके साथ में लाइफ को लेकर के इनका जो पॉजिटिव नज़रिया है बहुत ही खूबसूरत रहा है। जिस तरह से उन्होंने बताया कि हर्डल्स से फाइट करना ज़रूरी है, उन चैलेंजेस को फाइट करना ज़रूरी है, उसके आगे हमें घुटने नहीं टेकने हैं, उसके आगे हमने हाथ नहीं खड़े करने देने हैं, बल्कि उनको फाइट करना ज़रूरी है। अगर आप उस चैलेंज को फाइट करेंगे, उससे लड़ेंगे, उसका सामना करेंगे, तो आप उस चीज़ से पार हो जाएंगे और शायद कभी ज़िंदगी में वो सिचुएशन आपकी लाइफ में नहीं आएगी, क्योंकि आप उसको पार कर चुके हैं, क्योंकि आप जान जाएंगे कि अब इस सिचुएशन से आगे कैसे लड़ना है। इसके साथ इन्होंने, क्योंकि एक टीचर है, पैशनेट टीचर है, तो अपने स्टूडेंट को इन्होंने बहुत अच्छी एडवाइस दी है, काम रहने की, पैशनेट की, लव, साथ में एक सॉफ्ट हार्ट होना ज़रूरी है। इस तरह की अगर चीज़ें, इस तरह के गुण, विशेषताएँ अगर हमारी लाइफ में, हमारे स्टूडेंट्स की लाइफ में होंगी, तो उनका भविष्य, उनका फ्यूचर बहुत खूबसूरत रहेगा और ये स्टूडेंट्स ही हमारी जो देश है उसका भविष्य है। तो ज़रूरी है कि इनकी लाइफ में भी ये सारी चीज़ें, ये सारे वैल्यूज़ हम ऐड कर सकें और ये होगा इन्हीं ऑथर्स की बुक्स के थ्रू, इन्हीं की राइटिंग के थ्रू, जिसको कि हम आप सबके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम के थ्रू। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का सेशन, आज का प्रोग्राम, आज का डिस्कशन? अगर आपको आज का वीडियो, आज का डिस्कशन पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इसी तरह के कंटेंट को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो सुपर पावर ऑथर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे हम इसी तरह के इवेंट्स आपके सामने लेकर आते रहेंगे, सीजन्स आते रहेंगे, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा बेहतर से बेहतरीन बना सकें। हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस प्रोग्राम को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं आपसे एक और नए एपिसोड में, एक और नए सेशन में, एक नए ऑथर के साथ, नई बुक के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू सो मच।